Star Special Edition. India, good evening. Thank you for joining us on Times Now, India's election news headquarters. As we speak, a grand Deepotsav is underway in Ayodhya. As many as 24 lakhs earthen lamps have been lit across 51 ghats, and the state administration led by Yogi Adityanath is trying to enter the record books once again. It was 14 lakh diyas last year. I was fortunate to be there reporting live from Ayodhya, and this time around the number of diyas is 24 lakhs. The reason I'm talking about the Grand Deepotsav in Ayodhya is because come January 22nd, we will see Pran Pratishtha of the Grand Ram Mandir. Before that, politics has broken out. We'll talk about the politics a little later. But in the build-up to the inauguration of the Ram Mandir, this is what Prime Minister Modi, Chief Minister Yogi Adityanath and Union Home Minister Amit Shah have said about the Mandir. मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। सरकार के निर्णय उस समय के हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के पूज्य संतों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वह उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कार्यक्रम बना है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है। गत वर्ष हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है। यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। देखिए, पहली दीपावली तो कल मनाओगे, बरोबर है? दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मनानी है। 2 हो गई, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला बैठे तब मनानी है। You heard the Prime Minister, then the UP Chief Minister. Let's talk about what Ram Baiters or Mandir Baiters have been saying. You have a leader from the Samajwadi Party, Mr. Burke, who's questioned the legitimacy of the Ram Mandir. This is even after the Supreme Court paved the way for a majestic Ram temple, which is the construction of which is in its final leg. Then you have Mr. Owaisi and also Congress's Salman Khurshid questioning the Ram Mandir once again. In fact, Mr. Khurshid has gone on as far as to say that this is nothing but an event for the BJP. बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल, गैर कानूनी तरीके से, वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी, लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कमाल ये है कि अब मस्जिद को शहीद करना ही
पर ही उनका यानी वो काफी नहीं हुआ उनका काम। उन्होंने उसको उस पर मंदिर और बनवा दिया, और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है। और ये अब ये चूंकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। तो अभी जो राम मंदिर की एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपकी क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। Let's now open this up with the panel that we have joining us. Aparajita Sarangi, Member of Parliament and National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Ratan Sharda, author, political analyst, needs no introduction. Really, Advocate Nikhil Jain is a political analyst. Tari Ahmed Lari is a Samajwadi Party supporter. Kishore Tiwari, spokesperson of the Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray faction, completes the panel. Ratan Sharda, I want to begin by asking you, the Supreme Court in its verdict has cleared the construction of the Ram Mandir. In fact, the construction is in its last stages. On January 22nd, we have the Pran Pratishtha ceremony, the puja as we all call it. But still you have people like Mr. Burke who are saying masjid ko shaheed karke mandir banaya. Salman Khurshid says ye event hai BJP ke liye. See, on this wonderful occasion, when Ram will be returning to his home after 500 years of Vanvas, I would not like to get into any bitter, useless shop talk with these people who are Ram Drohis, I would put it, because Ram Drohis are those who don't believe in Ram, who want to bring down Ram. So I don't want to get into debate with such Ram Drohis. As far as Ayodhya is concerned, see, what they don't realize is that before Masjid, there was a temple. So a temple for which Hindus fought for 500 years continuously, history recorded, radiology records, X-ray records, scientific records, they do not want to believe anything. So masjid, which is built on a temple which is illegal as per even Quran, becomes shaheed. But the temples which are there for thousands of years, and 40,000 temples at the last count that were destroyed to create masjid or just remove them from this world, they are all legal. So this lack of interest or lack of respect for Hindu sentiment is clearly seen in their way they look at it. And also remember, Ayodhya is the only Tirtha Kshetra which has not been renewed, which got into decay because of the destruction of temple. Every other temple town in India, irrespective of where it is a thriving economy, which is a center of arts, science, and education, culture. So these temples are not just, some Devi Devata temple. These are the temple towns on which the economies thrived. By world over towns and cities came up, went down. Our temple towns are those which have remained bastion of wonderful economic activities, education and culture. So Ayodhya is coming back to the same glory. Why these people should be upset, I do not know, naturally, because they hate Ram, they hate Hindus. So what can I say? And now if you look at the final thing, it gives employment to lakhs of people. Don't they understand that lakhs of people and cottage industry people, earthenware people are putting the lamps there, and the wonderful atmosphere that will be there. I hope I could have gone there. I'd be looking forward to it. And those people who always oppose temple will naturally oppose this also. So those with bitter taste in mouth and poison in the mouth
can keep on shouting. I don't give her time. Okay. Now we'll come to address the larger question, and you touched upon it, and we'll come to it. Prajita Sarangi, before I bring you in, I want to quickly bring in Kishore Tiwari. Kishore Tiwari ji, उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि हमने वहां पे मस्जिद गिराई. आपके जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा कि शिव सैनिक थे सबसे आगे बढ़ के. इंडिया पार्टी के जो एक नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है शफीकुर रहमान बर्क, वो देखिए मंदिर इनॉग्रेशन से पहले क्या कह रहे हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया. नहीं, देखिए, हम इंडिया अलायंस के मेंबर है, लेकिन हम एक हिंदू पार्टी है, और राम मंदिर बनाने के लिए जो रास्ता खोला गया, उसके लिए बाबरी ढांचा जो था उसको हमने ही ध्वस्त किया. और उस वक्त बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने कह दिया था कि मेरे लिए तो बहुत दुर्भाग्य का दिन है. और खबरों में भी यही आया था. आरएसएस ने भी डिसोन किया था, विश्व हिंदू परिषद ने डिसोन किया था. एक ही आदमी था, हाँ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा था. लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं. नहीं किशोर तिवारी जी, एक मिनट देखिए, आपने जो अभी बात बताई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरी बात बताएं. उससे पहले मैं और प्रतिक्रिया ले लेता हूं. तारी अहमद लारी भी है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, और निखिल जैन भी है. निखिल, मिस्टर तिवारी इज सेइंग वी वर द वंस हु डेमोलिश्ड द मंदिर, yet he is part of this so-called secular Team India alliance. No, Babri Mosque. We are not demolished the mandir. No, Babri Masjid, I said. Kishore Tiwari, Babri Masjid. Okay, sir. Okay. Nikhil. Pranesh, what happened in the past, let's keep it in the past. Let's look towards the future of the country and how. But this is not the past. ये तो अभी बोल रहे हैं. I mean, I am not playing out an archival. No, Nikhil, you know, I am not. What happened? Listen, I am not playing out what Tiwari ji had said in 90s. मैं अभी वो पैनल पे बैठे, he is speaking for himself, for his party. आवाज कार सेवा काल से. There you go. Ganesh, what I'm saying is that what happened in the past, even though a panelist may be speaking about it right now, but what happened in the past 31 years ago, let's keep it in the past. Who broke the mosque, who did not break the mosque, let's not go into that. Let's look at how the ruling party of the day is trying to misuse religion, is trying to appropriate Lord Ram for its own political gains. See, the BJP or its leaders are not the only people who are staunch Hindus or who believe in Lord Ram. Congress, SP, Shiv Sena, TMC, BRS, you name the party and you'll find lot of leaders who let me name the parties. Mr. Ratan Sharda also wants to come in. I have to get the BJP into the mix now. 1 minute. Nikhil, Asaduddin Owaisi, now you tell me whether you agree with this or not. Asaduddin Owaisi, I'm quoting him. Kamal Nath has proven that Congress had an equal role in snatching Babri along with the BJP RSS. Congress had equal role in demolition, and said that Congress leaders, why they always presented a fake secular face before people, that Rajiv Gandhi opened the locks. Do you agree with this? Absolutely not. Rajiv Gandhi may have agreed the locks and may have been allowed Hindu devotees to enter into the premises of the mosque to offer their prayers, but I don't know how Asaduddin Owaisi leads to a conclusion that the demolition of a mosque was had anything to do with the Congress. It most certainly did not have anything to do with the Congress. Yeah. But again, let's not talk about the 80s and the 90s and what happened, who opened the gates, who demolished the mosque and this and that. Let's talk about 2023 where we are. Let's look towards 2024 and what is happening right now. What the Hindus of the country need to realize is that there is one political party in the country that is trying to misappropriate their religion, their God, our God, into something as a political tool, and that is something that every Hindu needs to denounce. Okay, but if you are disowning, if you are disowning Lord Ram, if you are disowning Lord Ram, and if someone is appropriating it, who has disowned Lord Ram? No. Who has disowned Lord Ram? Pranesh, who has disowned Lord Ram? Who has disowned Lord Ram? Has Kamal Nath not been a practicing staunch Hindu? Is Rahul Gandhi not a practicing staunch Hindu? Is Kamal Nath not a Digvijay Singh not a practicing staunch Hindu? At the same time, you have a Salman Khurshid who is a practicing Muslim. Then you
you can't have it both ways. You can't then invoke, you can't invoke that Rahul Gandhi is a Janeudhari, is a Ram Bhakt, Shiv Bhakt, what have you, and also say that, look, Prime Minister Modi and BJP, they are using Ram card to get votes. Ratan Sharda, what are we seeing? Just very small that is the nuance. Pranesh, no. Let Mr. Sharda come in. He'll tell you the difference. Nikhil, just hold on, please. Nikhil, let's not talk over each other, please. Finish one small point. See, don't forget, Rajiv Gandhi started his election campaign from Ayodhya. He said, I'll usher in Ram Rajya. Are you disowning Rajiv Gandhi? Then this UP under Sonia Gandhi said Ram is a myth. He did not exist. Do you agree with that? Your lawyers in the court continuously delayed the judgment. They went on delaying the argument in the courts. Do you think that they were doing service to Lord Ram? And what Mr. Sharda is saying is a fact. Aparajita Sarangi has been on this panel in the past. We've discussed this in detail. And Ms. Sarangi, you would remember that the Congress always has this double speed going when it comes to Ayodhya and Ram Mandir. Not at all. Not at all. A very good evening. It's a great day today. Can I say? Make your point, ma'am. I would seek patience from everybody. I have heard all. See, it's a great day today in Ayodhya. 24 lakh diyas are getting illuminated on 51 ghats of Saryu River. And I can only say that Ram Mandir wahi banayenge aur tareekh bhi batayenge. On 22nd of January 2024, Pran Pratishtha will take place and Honorable Prime Minister would be there. Now, to every action of Prime Minister Modi and his government, there is an equal and opposite and negative reaction. The fact remains that pursuant to the Supreme Court judgment of 9th November 2019, it was the government of Prime Minister Modi which actually started getting the work grounded through Sri Ram Janmabhoomi Tirth Trust. And now, within a record time frame, I would say, this entire building work has been done, almost done, and a magnificent thing is coming up in Ayodhya. So I think these people who have come now should not come forward and say, we also own Ram. It's good that you are owning Ram. In fact, this is the biggest victory of Bharatiya Janata Party's ideology. If you all come forward and say Ram is ours, of course Ram is ours. Ram is in everybody. We are not denying that at all. But please don't forget that these are the people who went to the Supreme Court and filed an affidavit questioning the existence of Ram. No, is what Aparajita Sarangi is saying, is that not true? Who had fired? Was that affidavit filed or not, Nikhil? You're a man of law, you're a lawyer yourself. No. First of all, first of all, I take very strong objection to the fact that the BJP member of parliament, national spokesperson, is talking about owning Lord Ram. Madam, nobody owns Lord Ram. We embrace Lord Ram. Lord Ram is. I'll tell you, all Ram Bhakts own Lord Ram. Very strong objection with the words that you've used. No. Nikhil Jain, Ratan Sharda will also tell you that all Ram Bhakts can claim to own Ram. It's okay. We are welcoming it's okay. It's their belief. I take very strong objection to those. Nikhil, all Ram Bhakts, you're not understanding, Nikhil. All Ram Bhakts at the same time can claim to own Lord Ram. It's a belief. So let's not, go there. Coming up and you are owning up. You embrace the God, you embrace the Lord Pranesh, you don't own. But that objection outside the way, let me get to the point and answer the question, that pertinent specific question that you've raised to me. That wasn't. Ma'am, just let him make his point. I'll come back to you for a counter. Yes, an affidavit was filed. Ma'am, let me at least reply. Aparajita ji, just let him answer on the question that you raised, and I'll come back to you. Aparajita ji, let him answer. I'll come back to you for a counter. Supreme Court. Okay. In the Supreme Court, an affidavit was filed, and let me read out what that affidavit had actually said. Just a second. That affidavit clearly had said that there is no historical proof for it, even though Lord Ram and the Hindu religion is a very important part of our civilization. So you believe there is no historical proof? Now, if we are going to say that mythology is the same,
Pranesh, is there any archaeology? Are we literally having this discussion on national Ayodhya, television? Nikhil, There is no difference between mythology and the history. Supreme Court, do you know what was the title Pranesh, dispute all about? Ram is a matter of faith and belief of hundreds of millions of Hindus. Yeah, that faith is myth for you, just like the DMK had called it a myth. Pranesh, it is, Pranesh, archaeological evidence of a temple and archaeological evidence of a god Nikhil, are two different things. Let's not try to confuse Ram the and country between Sanatan mythology and history. I'm sorry, I have is to not make this mythology. argument It is a that class 8 student civilization. should It is a understand. civilization. There you go. You know, you are saying that Congress party has never done this, never done that. Ratan Sharda. I didn't say it. Nikhil Jain is admitting. The affidavit that was filed, that betrays the mindset. Pranesh, mythology and history are two different things. I'm talking about civilization. Ram is not mythology. Ram is civilization. Sanatan is civilization. It's a culture. Belief. There is a difference between archaeological backed history and civilizational belief. Lord Ram is a civilizational belief. He's the faith of hundreds of millions of Hindus in the country. Ratan Sharda is a counter to what you said. He will remember that there are people who ridiculed Ram saying कौन से हॉस्पिटल में कौन से बेड नंबर पे पैदा हुए थे, ये सवाल इनका था. तो राम जो 10,000 साल से पुराने हैं उनके लिए आपको हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए. Just because you don't have proof, for you Dwarka didn't exist. For you Dwarka didn't exist. Dwarka is under the sea now, 8,000-year-old city. For you civilization exists 8,000-year-old. Now you have got a Rath chariot which is 8,000-year-old. Now 1 minute. Let me. What is the concept of mythology? Okay, if you have a problem, Nikhil, let's do it this way. 1 minute, Mr. Sharda, allow me. I beg your indulgence, Nikhil. Let's do it this way. If you have a problem with Aparajita Sarangi or Ratan Sharda saying that, let me put this to Mr. Tiwari. He's part of Team India, as secular as a man or a party can get. किशोर तिवारी जी, राम जो है लॉर्ड राम, वो निखिल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइजेशन will also not change just because someone does not have the capability to understand it. Now Nikhil, that is what I let me civilizational belief. Dwarka real or mythology? Let me bring in किशोर तिवारी जी, आपसे पूछूंगा और उसके बाद मैं खान साहब से. तारी अहमद लारी जो है वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. लारी साहब आ रहा हूं, माफी मांगूंगा आपसे, आपके पास आ नहीं पाया. किशोर तिवारी जी, लॉर्ड राम क्या है, माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है? नहीं, राम जो है वो इस देश के चारित्र है एक्चुअली, और ये एक संस्कृति है जो शाश्वत संस्कृति है, और राम सबके दिल में बसते हैं. लेकिन मैं निखिल की एक बात से एग्री करूंगा कि बीजेपी ने चुनाव में जीतने के लिए राम का बाजार लगा के रखा है, और मैं कहता हूं अपराजिता, इस वक्त तुम पराजित हो जाओगे. कितने भी दिए लगा लो. हाँ, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे 10 साल का जो कुशासन है उसका फायदा राम तुमको नहीं दिलाएंगे. तुमको हनुमान जी ने दंडित किया था, अब राम जी दंडित करेंगे. Okay, quick response. Aparajita Sarangi, the BJP is using Ram and Ram Mandir for votes ahead of 2024. So this is very unfortunate that something which is very, very clear right from the beginning is being questioned at this juncture. We have been talking about Ram, we have been talking about our ideology since the beginning. That has been our strength, and Ram is an integral part of Indianness, if I can say so. I'm going beyond Hinduism. Ram sabke hain aur Ram sab mein hai. No, she is not answering my. When Congress is coming forward and saying, she is not answering my question. That Tiwari ji, your question is for people to answer. This is the biggest victory of Bharatiya Janata Party's ideology. And please don't forget the Supreme Court order. Please don't forget some time back. I think he has to stop before I speak. The Supreme Court has allowed for a Ram temple construction. He has to stop before I speak. Okay, because we are talking about the Supreme Court order, let me bring in Tari Ahmed Lari. Lari Saab,
जो मिस्टर वर्क हैं उनका कहना है कि ये राम मंदिर जो 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, उससे पहले उन्होंने कहा है कि मस्जिद को शहीद करके ये मंदिर बनाया गया है और मंदिर के लेजिटिमेसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, आप राम जी की बात कर रहे हैं, बहुत लोग मानने वाले हैं, बहुत नहीं मानते हैं। मैं कितनों को जानता हूं जो राम जी पे बिलीव नहीं करते हैं, जो उनके ऊपर बिलीव करते हैं जिनकी पूजा राम जी करते थे। तो हैं कुछ लोग, मैं जानता हूं, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग हैं, शाक्त लोग हैं। आप जाइए, जाके पता करिए। राम जी एक आस्था थे, ठीक है, राम मंदिर एक आस्था था, बिल्कुल आस्था था, नहीं है। आदमी किसी भगवान को अगर आप उनको भगवान कह रहे हैं तो कोई नहीं, आस्था था, है और रहेगा, लेकिन कोई आदमी भगवान राम का मालिक नहीं बन जाएगा। जैसे वो राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, राम जी को कोई लेकर आएगा इस दुनिया में? वो अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, भगवान को कोई नहीं ला सकता है। दूसरी बात, मैं एक मुसलमान हूं, मैं सामने बैठा हूं, शफीकुर रहमान बर्क साहब भी एक मुसलमान है। अल्लाह में हमारी आस्था है, लेकिन मैं आगे बढ़ के भी मेरी आस्था है। मैं बाबा का भक्त भी हूं, मैं माता रानी का भक्त भी हूं। मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? मैं कहता हूं, बिल्कुल खुल के कहता हूं, उसमें कौन सी बात है? मुझे इस देश का कानून मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तारिक भाई, आई एम ग्लैड व्हाट यू सेड। मैं बस आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपने तो ये कह दिया, एंड यू नो वी हैव टू अपलॉड यू बिकॉज यू हैव स्पोकन योर माइंड। बट अगर मैं AIM, जैसे आप देख लें, ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके जो नेता हैं, जो MLA भी थे बॉम्बे से, मैं नाम भूल रहा हूं, रतन शारदा, फॉरगेटिंग हिज नेम, यू नो आई कांट क्वाइट रिकलेक्ट हिज नेम। वारिस पठान साहब, वारिस भाई जी, वारिस भाई। तो वारिस भाई ने एक बार ऐसे बोल दिया था गणेश जी के लिए, उनको माफी मांगनी पड़ी थी, उनको बैड मुस्लिम बोल दिया था। मैं 100 बार बोल चुका हूं, मैं कोई पहली बार नहीं मैं 100 बार बोल चुका हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं, मैं 100 बार बोल चुका हूं। आपके चैनल पे आपके साथ मैं पहली बार बैठा हूं, नहीं तो आप ही के चैनल पर बैठ के मैंने श्वेतांगम श्वेत चंद्रम श्वेत वस्त्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवादि देवम नमस्तुते, मैंने ये श्लोक भी पढ़ा है। बहुत बढ़िया। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा। तारिक भाई, तब मुझे आपसे ये सवाल करना है कि अगर आप दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, तो ऐसे नेता जो कहते हैं कि राम मिथ है, या जैसे बर्क साहब का कहना है कि मंदिर जो है इलीगल है, मस्जिद की शहीदी के बाद हुआ था, तो ये बेबुनियाद बयान नहीं है क्या? इससे आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा? नहीं, शफीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं, ये उनसे पूछिए कि क्यों कहा। एक बार जब फैसला हो गया और उस पर कहा गया था कि कोई भी मुसलमान इस पर टिप्पणी नहीं करेगा, तो बार बार उस चीज को, मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत तो है नहीं। बुजुर्ग आदमी है, जबान फिसलती है, दिमाग भी फिसल जाता है, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता है तारिक भाई कि ये जो वो कह रहे हैं वोट पाने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, उनका खुद का, मैं सीधे बात करता हूं, देखिए उनका जो क्षेत्र है वहां पे 70% मुसलमान वोट है, तो उनको वो 70% मुसलमान वोट चाहिए। बाकी दुनिया में चाहे जो सब हार जाए, लेकिन आई एम ग्लैड, यू नो, मिस्टर तारिक अहमद लारी, आई हैव टू अपलॉड यू बिकॉज यू नो यू स्पीकिंग सो कैंडिडली। रतन शारदा, इट्स नॉट वेरी ऑफन दैट यू नो गेट टू जी। I'm a straightforward person, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। I salute you, लारी साहब। मैं चमचागिरी किसी की नहीं करता। I salute you। पार्टी में भी किसी की चमचागिरी करता हूं। I salute you, sir. I salute you. Now, Mr. Sharda, we don't have much time on the show. I'm giving you the last word on the show. How should people see this? Because many people are saying that it is only one party which is making Ram Mandir a poll issue before 2024. Nobody stopped anybody from making it a poll issue. Nobody asked anybody not to make Ram Temple. Congress was welcome. Rajiv Gandhi opened the locks. Rajiv Gandhi started his campaign from Ayodhya. And there are people who opposed it today. They want to welcome it. I welcome people like Tariq Bhai, who has very, very sportingly spoke about it. And he seems to have been a wrong party because Mulayam Singh ji till a few years back
who had got car saver skills, and I would do it again. I'm a secular person. So, I'm in the right party right now. That's okay. तो जो मुलायम सिंह ने कहा था अलग बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मुलायम सिंह जो सुधार रहे हैं अच्छी बात है। ऐसे लोग जो कहते हैं टॉयलेट बनेगी वहाँ, पब्लिक टॉयलेट बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, आज मगर दुखी मुझे कोई चिंता नहीं है। आम हिंदू खुश है, आम हिंदू की आंखों में बिल्कुल ज्वलंत एकदम सितारे चमक रहे हैं। आज करोड़ों हिंदू टीवी पर बैठे होंगे और देख रहे होंगे वहां का दृश्य, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जो अभी भी रामद्रोही है उनको कहें कि शांत रहे, बलता जनता उनको माफ नहीं करेगी और सारी जनता खुश है, आप भी खुश होइए। बीजेपी करे, कांग्रेस करे, हमने तो हमेशा कहा था कोई भी करे। खुद विश्व हिंदू परिषद ने सबको जाके मिले थे और कहा था राम मंदिर बनाइए। Okay. On that note, we'll have to end this. We've run out of time completely. Aparajita Sarangi, Ratan Sharda, Nikhil Jain, Tariq Ahmed Lari, and Kishore Tiwari. I thank you all for joining us on Times Now. Wish you all a very happy Choti Diwali once again.